Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lecture we were discussing about extrusion and spheronization technique. So in the same lecture series, today we will be continuing the discussion on extrusion and spheronization technique with a little detail added in it. So let's start with the general process description. Extrusion spheronization is a process requiring at least 5 units of operation with an optional 6th screening step. First, the materials are mixed to achieve a homogeneous powder dispersion and then wet granulated to produce a sufficiently plastic wet mass. The wet mass is extruded to form rod-shaped particles of uniform diameter that are charged into a spheronizer and rounded off into spherical particles. These spherical particles are then dried to achieve the desired moisture content and optionally screened to achieve a targeted size distribution. एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन का प्रोसेस 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर 6th स्टेप ऑप्शनल स्टेप होता है, जिसे हम स्क्रीनिंग स्टेप कहते हैं. सो प्रोसेस स्टार्ट होता है विद ड्राई मिक्सिंग. ड्राई मिक्सिंग के अंदर एक होमोजेनियस पाउडर डिस्पर्जन फॉर्म की जाती है, एक पाउडर ब्लेंड फॉर्म किया जाता है एक्सीपिएंट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का. एंड देन ये ड्राई मिक्स वेट ग्रैनुलेशन के प्रोसेस से गुजरता है. वेट ग्रैनुलेशन में एक प्लास्टिक वेट मास फॉर्म होता है बाय द एडिशन ऑफ अ ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड एंड सम बाइंडर्स इन इट. ये प्लास्टिक वेट मास अगेन एक्सट्रूडर्स से गुजारा जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रूजन एंड द रिजल्टेंट phenomena, you can say that the extruded particles are actually converted to rod shaped particles. जो वेट मास ग्रैनुलेशन से प्रिपेयर हुआ वो एक्सट्रूडर से गुजरने के बाद रॉड शेप पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या रॉड शेप्ड रॉड शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है. ये रॉड शेप्स यूनिफॉर्म डायमीटर की होती हैं दैट आर एक्चुअली चार्ज्ड इनटू स्फेरोनाइजर या स्फेरोनाइजिंग इक्विपमेंट में डाली जाती हैं, और ये रॉड शेप्स राउंड ऑफ होती हैं. स्फेरोनाइजर इनको राउंड ऑफ करता है और स्फेरिकल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करता है. ये स्फेरिकल पार्टिकल्स अब ड्राइंग के प्रोसेस से गुजरते हैं 5th स्टेप में. ड्राइंग के प्रोसेस में ये स्फेरिकल पार्टिकल्स को ड्राई किया जाता है टू अचीव द डिज़ायर्ड मॉइस्चर कंटेंट एंड देन दे आर ऑप्शनली स्क्रीन्ड, या उन्हें स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है टारगेटेड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए. बट दिस स्टेप इज सोली एन ऑप्शनल वन. The process flow diagram is shown over here, and this process flow chart shows you the process flow of extrusion and spheronization along with variables. The process starts with dry mixing, as we have already learned. Dry mixing process is associated with certain variables that are equipment and mixing time. The second process step is wet granulation. Once the dry mixing is done, wet granulation is carried out. Here the process variables again include equipment type, what type of granulating equipment you are using, the fluid type and the fluid level, and wet massing time, for how long the wet massing is being carried out in that granulating equipment. These are all process variables for wet granulation step. Once wet mass is formed, it is leaded to extruders. The process is known as extrusion. Here the process variables again include equipment type,
die diameter from which the wet mass would be passed on, the die length because it would determine the rod length, and the feed rate, how much amount of wet mass was fed in that particular extruder. These are all process variables for this particular step, that is extrusion. Once the rods are formed, they are spheronized in spheronizers, and the process is known as spheronization. The process variables include equipment type, residence time, disk speed, and charge. The last step of the whole process is called as drying, which is a mandatory step. Here the process variables again include what type of dryer you are using, how much amount of time you are incorporating in drying a particular spherical particle, and at what temperature these spherical particles are dried. The next step is an optional one which is not included in this process flow variable chart, which is screening or sieving. It is only done if the spherical particles are not of appropriate size or there is a large particle size distribution exists. Then only can we do the screening or sieving step in order to achieve the targeted size distribution. The end products from each steps are shown over here. Here you can see the 4 types of diagram. In A, the powder from dry mixing is presented. Here you can see there are only powder particles, although the vision is not clear, but just think about it that these are the powder particles which are actually obtained after blending or mixing. Once these are blended together or mixed together, they get to the next stage, that is granulation, where granulating fluid is added and it is subjected to certain granulating equipment and granules are formed, or a wet mask with plastic consistency is formed. It is shown over here. You can see that there are some larger agglomerates along with the smaller ones. This is a wet mask that is obtained from a granulation process. This wet mask is again passed on to the extruder where the rod-shaped particles are obtained. These rods are actually the wet rods which are obtained after passing this wet mass from extruder, and the shape of the die and diameter of the die and the length of the die have actually yielded these types of rods. Once these rods are formed, they are subjected to the spheronizer where these rods are converted into spherical particles. This diagram, which is shown in D part, are spheres which are obtained after spheronization. So let me repeat it. A डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ पाउडर पार्टिकल्स हैं जिन्हें मिक्सिंग या ब्लेंडिंग से अटेन किया गया है. इन पाउडर पार्टिकल्स की हम वेट मासिंग करते हैं और वेट मासिंग के बाद ग्रैनुलेशन के स्टेप से गुजारते हैं. ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं, लार्ज साइज एग्लोमेरेट्स फॉर्म करते हैं जिसके अंदर लिक्विड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है. ग्रैन्यूल्स फॉर्म करने के बाद यही ग्रैन्यूल सब्जेक्ट होते हैं एक्सट्रूडर्स पे और एक्सट्रूडर्स से पास होने के बाद रॉड शेप्स मिलती हैं. ये रॉड शेप पार्टिकल्स अगेन स्पेरोनाइज़र से गुजरते हैं और स्पेरोनाइज़र में स्पेरोनाइजेशन के थ्रू स्पेरिकल या सर्कुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो पाउडर से स्टार्ट हुआ, वेट मास फॉर्म हुआ, वेट मास फॉर्म होने के बाद रॉड्स फॉर्म हुई और रॉड्स फॉर्म होने के बाद अगेन स्पेयर्स फॉर्म हुए. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस topic, that is equipment description and process parameters. The first one is dry mixing. The first step is actually dry mixing. During the first step, powders are dry mixed to achieve a uniform dispersion prior to wet granulation that we had already discussed. It is generally carried out in the same mixer used for the granulation.
However, if a continuous granulator is used, a separate mixer is required for the dry mix. This step is typically taken for granted because wet massing follows. The uniformity of the dry mix, however, can have a significant effect on the quality of the granulation and in turn the spherical particles produced. An uneven distribution of materials having wide differences in properties such as size and solubility can result in localized overwetting, at least initially during the granulation step. The more soluble and finely divided components can also dissolve and become part of the granulating fluid. The fluid's rich in soluble compounds can either remain as overwet regions or with continued wet massing can be redistributed. Sphere uniformity, size and shape is very much dependent on the uniform distribution and composition of the granulating fluid, which include not only the solvent but also any dissolved ingredients. So ड्राई मिक्सिंग में ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर पाउडर्स ड्राई मिक्स किए जाते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन मिल सके वेट ग्रैनुलेशन से पहले. जनरली ड्राई मिक्सिंग ग्रैनुलेशन इक्विपमेंट में ही की जाती है, लेकिन अगर कंटिन्यूस ग्रैनुलेटर यूज़ हो, लेकिन कभी कभार सेपरेट मिक्सर भी रिक्वायर्ड होता है फॉर ड्राई मिक्सिंग. ये स्टेप typically for granted लिया जाता है because major step is wet massing. Uniformity dry mix की एक significant effect produce कर सकती है quality of granulation के ऊपर और in turn spherical particles जो produce हो रहे हैं उनके ऊपर. इसी वजह से dry mixing is an important step and it should not be taken for granted. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मटेरियल्स की होती है तो वाइड डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, लाइक साइज में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे और ये रिजल्ट करेगा लोकलाइज्ड ओवरवेटिंग के ऊपर. इनिशियली ग्रैनुलेशन स्टेप में जब इनिशियली ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड ऐड होता है तो इनिशियल स्टेप के अंदर लोकलाइज वेटिंग हो सकती है अगर यूनिफॉर्म ड्राई मिक्स नहीं है तो. मोर सॉल्यूबल और फाइनली डिवाइडेड कंपोनेंट्स इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड का पार्ट बन जाते हैं. इस वजह से जो फ्लूइड रिच इन सॉल्यूबल कंपाउंड्स होता है वो या तो ओवरवेट रीजन में ही रहता है या फिर वो कंटिन्यूड वेट मासिंग के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो आप वेट मासिंग में यूनिफॉर्मिटी अचीव नहीं कर सकते अगर इनिशियली ड्राई मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, जो इन टर्न फर्दर कॉन्सिक्वेंट स्टेप्स पे असरअंदाज हो रही है. स्फेयर यूनिफॉर्मिटी लाइक साइज और शेप डिपेंड करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और कंपोजिशन ऑफ ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड के ऊपर. अगर ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड में स्मॉल साइज पार्टिकल मिक्सअप हो जाएं और सॉल्युबलाइज हो जाएं तो वो स्फेयर यूनिफॉर्मिटी के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. The next step is granulation. The second step is granulation, during which a wet mass having the requisite plasticity or deformation characteristics is prepared. With a few exceptions, this step is similar to conventional granulation techniques used to produce product for compression. It is typically carried out in a batch type mixer granulator. However, any equipment capable of producing a wet mass including the continuous type can be used. ये सेकेंड स्टेप है स्फेरोनाइजेशन या एक्सट्रूजन प्रोसेस का. इस स्टेप के अंदर वेट मास फॉर्म किया जाता है जिसमें प्लास्टिसिटी और डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं. कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये स्टेप मोर और लेस सिमिलर होता है कन्वेंशनल ग्रैनुलेशन टेक्निक से जो हम मोस्टली कंप्रेशन के लिए करते हैं, लाइक टैबलेटिंग के लिए करते हैं. इस स्टेप के अंदर डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स और ग्रैनुलेटर्स यूज़ होते हैं. टिपिकली बैच टाइप मिक्सर और ग्रैनुलेटर यूज़ होते हैं, लेकिन कोई भी इक्विपमेंट जो केपेबल है वेट मास प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो कंटिन्यूस टाइप का हो या बैच टाइप का हो, वो यूज़ किया जा सकता है इस स्टेप में.
Batch type processors include planetary mixers, vertical or horizontal high shear mixers, and sigma blade mixers. Examples of continuous mixers include the Nika M6 instant mixer and high shear twin screw mixer extruders. The high shear twin screw mixer extruders have mixer feeders that are capable of shearing and kneading the feed materials. बैच टाइप प्रोसेसिंग मिक्सर्स की एग्जांपल्स में प्लानिटरी मिक्सर्स आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाई शेयर मिक्सर्स आते हैं और सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स आते हैं. ये सारे मिक्सर्स की टाइप आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल में यहाँ नहीं जा रही. कंटिन्यूस टाइप के मिक्सर्स में नीका M6 इंस्टेंट मिक्सर है और हाई शेयर ट्विन स्क्रू मिक्सर है या एक्सट्रूडर कहलाता है. हाई शेयर या ट्विन स्क्रू मिक्सर एक्सट्रूडर्स में मिक्सर फीडर्स अटैच्ड होते हैं जो कि शेयरिंग और नीडिंग एक साथ कर रहे होते हैं फीड मटेरियल की. Dry powders and fluids are fed in through separate pots and mixed by the action of the extruder blades and screws. The mixer extruder is capable of being configured to customize the amount of shear and energy used in the process by changing the configuration of the mixing blades. This can have an impact on the properties of the extrudate produced. ड्राई पाउडर्स और फ्लूइड्स सेपरेटली फैड होते हैं पॉट्स में और दे आर मिक्स्ड बाय एक्सट्रूडर ब्लेड्स एंड स्क्रूज. मिक्सर एक्सट्रूडर्स में कैपेबिलिटी है कि ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ शेयर को और जो एनर्जी यूज़ हो रही है इन द प्रोसेस जो एक्चुअली कन्फिगरेशन चेंज कर रही है बाय चेंजिंग द मिक्सिंग ब्लेड्स. दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सट्रूडेट्स प्रोड्यूस्ड. As with the batch processors, it is critical to achieve a uniform level of fluid within the wet mass. The proper fluid-solid ratio is accomplished by maintaining a steady powder and fluid feed into the mixer extruder. Both are critical. However, the powder feed is the most problematic. Small variations in feed rates can cause significant shifts in the moisture content of the granulation and therefore the quality of the sphere particles produced. Batch processes में uniform level of fluid within the wet mass achieve करना एक critical step है. अगर proper fluid solid ratio नहीं achieve होता by maintaining steady state powder या fluid mixer में तो ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है. इसलिए प्रॉपर फ्लूइड सॉलिड रेशियो एकम्प्लिश करना बाय मेंटेनिंग स्टेडी पाउडर और फ्लूइड फीड रेशियो इन द मिक्सर एक्सट्रूडर इज़ इम्पॉर्टेंट. ये क्रिटिकल स्टेप्स हैं दोनों ही. पाउडर फीड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक होती है. स्मॉल वेरिएशंस इन पाउडर फीड्स कॉज कर सकती हैं सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन मॉइस्चर कंटेंट ग्रैनुलेशन में और इन टर्न ये इफेक्ट करेंगी क्वालिटी ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. The two major differences in the granulation step as compared to typical granulation for compression are the amount of granulating fluid required and the importance of achieving a uniform. The amount of fluid needed to achieve spheres of uniform size and sphericity is likely to be greater than that for similar granulation intended for tableting. दो मेजर डिफरेंसेस हैं ग्रैनुलेशन स्टेप में. अगर हम इस ग्रैनुलेशन स्टेप को कंपेयर करते हैं टिपिकल ग्रैनुलेशन स्टेप के साथ जो कंप्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड जो रिक्वायर है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है इस स्टेप में. अगर हमें यूनिफॉर्म डिस्पर्जन चाहिए तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड नीडेड है स्फेयर्स फॉर्म करने के लिए, यूनिफॉर्म साइज स्फेयर्स फॉर्म करने के लिए या प्रॉपर स्फेरिसिटी अचीव करने के लिए,
वो ग्रेटर अमाउंट होती है या ज़्यादा अमाउंट होती है जितनी कि हम किसी भी सिमिलर ग्रैनुलेशन स्टेप में यूज़ कर रहे हैं जो कन्वेंशनल ग्रैनुलेशन स्टेप है। लाइक टैबलेटिंग के लिए अगर आप कोई ग्रैनुलेशन प्रोसेस से पाउडर्स को गुजार रहे हैं तो ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड जो उसमें यूज़ करेंगे या अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड जो उसमें यूज़ करेंगे वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड विच इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रैनुलेशन. Instruments such as a ram extruder and a torque rheometer have been used to characterize the flow characteristics of granulations for use in extrusion spheronization. They are useful tools in quantifying the rheological effect of formulation and process variation in the granulation. The ram extruder has been used to characterize the flow of wet masses through a die which has been divided into stages. There are compression, where the materials are consolidated under slight pressure, B. steady state flow, where the pressure required to maintain flow is constant, and C. force flow, where an increase in force is required to maintain flow. The three stages are shown in the force versus displacement profile over here. This is the compression stage, steady state flow stage, and the forced flow stage. The plot is plotted for rate force versus displacement. दो मेजर डिफरेंसेस हैं ग्रैनुलेशन स्टेप के, जैसे अभी मैंने आपको बताया. इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टराइज करने के लिए वो मोस्टली रैम एक्सट्रूडर्स या टॉर्क रियोमीटर्स यूटिलाइज होते हैं जो स्फेरोनाइजेशन में एक्सट्रूजन में फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं. ये यूज़फुल टूल्स हैं रियोलॉजिकल इफेक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए और प्रोसेस वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रैनुलेशन में. रैम एक्सट्रूडर्स में वेट मास का फ्लो कैरेक्टराइज हो सकता है डाई की वजह से. ये कैरेक्टराइजेशन स्टेजेस में डिवाइडेड है. लाइक ए स्टेज के अंदर कंप्रेशन है. कंप्रेशन में मटेरियल कंसोलिडेट होते हैं अंडर स्लाइट प्रेशर. सेकेंड स्टेट स्टेडी स्टेट फ्लो स्टेट स्टेज कहलाती है जहाँ पर प्रेशर जो रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द फ्लो इज़ कांस्टेंट. यानी आपने इनिशियली जो प्रेशर सब्जेक्ट किया था ऑन दी वेट मास वो स्लाइट प्रेशर था और उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर जहाँ स्टेडी स्टेट फ्लो अचीव हो रहा है वहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर है. एंड दी थर्ड स्टेज इज फोर्स फ्लो स्टेज जहाँ पर फोर्स को इंक्रीज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो. यही तीन स्टेजेस यहाँ इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेड है. कितनी अमाउंट के अंदर फोर्स रख रही है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये यहाँ शोन है. कंप्रेशन स्टेज के अंदर अगर आप देखें तो जो फोर्स इनकर हो रही है वो इनिशियली कम फोर्स इनकर हो रही है और स्लाइटली ये बढ़ती जाती है. इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है. एंड सडनली इट राइजेज अप टू दिस लेवल. यहाँ से स्टेडी स्टेट फ्लो स्टेज स्टार्ट होती है जहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स इज कांस्टेंट. And after a certain amount of time, displacement में force flow stage आती है जहाँ पर suddenly force को बढ़ाया जाता है in order to maintain the flow. The change from steady state to forced flow is caused by the movement of fluid under pressure. Extrusion in ram extruder is continuous, and this phenomena is less likely to be seen in extruders that are discontinuous, such as gravity feed models. ये जो चेंज आ रहा है स्टेडी स्टेट के अंदर फोर्स फ्लो का, ये एक्चुअली मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर, जो प्रेशर के दौरान मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो रही है उसकी वजह से कॉज हो रहा है. एक्सट्रूजन रैम एक्सट्रूडर्स के अंदर कंटिन्यूस होती है और ये फिनोमेना आपको ऐसे एक्सट्रूडर्स में नहीं मिलता जो डिसकंटिन्यूस एक्सट्रूडर्स हैं लाइक ग्रेविटी फीड मॉडल्स में.
Regardless of the mixer used, one must remember that the downstream process steps of extrusion and spheronization are very dependent on the level of water contained in the granulation and the quality of its dispersion. High energy mixers such as high shear mixers and high shear twin screw mixer extruders can cause a significant rise in temperature. It may be necessary to use a jacket to guard against heat buildup. High temperatures can result in a greater than tolerable level of evaporation or an increase in the solubility of some of the solids. किस भी टाइप का मिक्सर यूज़ हो रहा है ये ध्यान में रखना होता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस स्टेप्स के अंदर जो स्पेरनाइजेशन है वो डिपेंडिंग है ऑन द लेवल ऑफ द वाटर कंटेन इन ग्रैनुलेशन और क्वालिटी ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर. हाई एनर्जी मिक्सचर्स या हाई शेयर मिक्सर्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर में ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इन मिक्सर्स के अंदर एक जैकेट का इंक्लूजन ज़रूरी हो जाता है जो एक्चुअली हीट बिल्डअप को गार्ड करती है. हाई टेम्परेचर्स अगर हो मिक्सर्स में तो वो रिजल्ट करेंगे ग्रेटर देन टॉलरेबल लेवल ऑफ इवेपोरेशन को, यानी इवेपोरेशन बढ़ जाएगी. इवेपोरेशन बढ़ने की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि सॉल्युबिलिटी कुछ सॉलिड्स की भी बढ़ जाए. रिडक्शन इन फ्लूइड एक्चुअली रिड्यूस करेगी प्लास्टिसिटी को ग्रैनुलेशन के दौरान और दिस विल एक्चुअली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड इन टर्न इट वुड इंक्रीज द वेट रेशियो ऑफ द ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड. A reduction in fluid will reduce the plasticity of the granulation, while an increase in solubility will increase the weight ratio of granulating fluid since the solute is then part of that fluid. The water solubility of the drug in the granulation plays a key role in determining granulation endpoint for extrusion spheronization process. A high water soluble drug will dissolve in the granulation, whereas a highly insoluble drug will have wetting problems during the granulation step. वाटर सॉल्युबिलिटी ड्रग की ग्रैनुलेशन में एक की रोल प्ले करती है ग्रैनुलेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, स्पेसिफिकली एक्सट्रूजन या स्पेरनाइजेशन प्रोसेस के अंदर. हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स डिजॉल्व हो जाती हैं ग्रैनुलेशन में, जबकि हाईली इंसॉल्युबल ड्रग्स वेटिंग प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं ग्रैनुलेशन स्टेप के अंदर. Upon extrusion and during spheronization step, a granulation containing a highly insoluble drug at a high dose will have a higher tendency to release moisture, due to which the moisture will migrate to the surface of the extrudates, which might cause interpalate sticking. अगर हाईली इंसॉल्युबल ड्रग है जिसमें वेटिंग प्रॉब्लम्स हैं तो एक्सट्रूजन या स्पेरनाइजेशन के दौरान वो मॉइस्चर रिलीज़ करेगी और मॉइस्चर रिलीज़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मॉइस्चर माइग्रेट करे टू दी सरफेसेस और ये एक्चुअली इंटरपैलेट स्टिकिंग करेंगी. लाइक रॉड्स फॉर्म हो गई और मॉइस्चर सरफेसेस के ऊपर अवेलेबल है या मॉइस्चर माइग्रेशन हुई हुई है तो इंटरपैलेट स्टिकिंग अराइज होगी. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, Mehta et al. In their work demonstrated the use of small quantities of talc to absorb the surface moisture, which helped in the spheronization step without altering the drug release from the resulting pellets. इस interpellet sticking को avoid करने के लिए मेहता et al. ने एक फिनोमेना डिवाइस किया कि अगर हम ड्यूरिंग स्पेरनाइजेशन टैल्क को ऐड कर दें तो वो एड्जॉर्बेंट का काम करता है और सरफेस पे जो बाउंड मॉइस्चर है उसको एड्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से पैलेट्स के अंदर स्टिकिंग नहीं हो सकती और प्रॉपरली स्फेरिकल शेप्ड स्फेयर या पैलेट्स फॉर्म होते हैं. So this is all from this lecture. We will continue with the next step, that is of extrusion, in the next lecture.
Till then, take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.